Drapes तो आपके पास बहुत हैं, but how many sarees do you have in your cupboard? I recently counted and I have about, I think 1900, 1920, 1928 now. 1928. Hi guys, मैं हूँ स्तुति. Welcome to the Super Womania Show. आज जो हमारे हाथ आई हैं but she's such a high flyer and she has such a busy schedule, but I'm so glad that finally we get to spend some time with celebrity sari draper Dolly Jain. Welcome to the Super Womania Show. Thank you so much, Stuti. Thank you so much. It's indeed a pleasure to be at this kind of a platform. Dolly ji, सबसे पहले, because when you were setting the camera, I saw that tattoo that you have. If for all my listeners and viewers, आप बताएं कि वो tattoo में लिखा क्या है? So my tattoo says, I am 6 yards ahead of my time. This 6 yards, हर हिंदुस्तानी औरत in particular is familiar. But आपने इसे जो turn around करके इंडिया को एक अलग पहचान दी है, खुद को एक अलग पहचान दी है. So congratulations to you for that. And this is such a cool thing that you've got tattooed, which is quite literally what you're doing with your life, which is amazing. हम जब modernity की बात करते हैं तो हम कहते हैं modern होना मतलब modern कपड़े, you wear western clothes, and साड़ी को कई बार हम कहते हैं कि तो हमारी दादी नानी माँ पहनती है, ये तो देसी पोशाक है. But आपने अपनी किस्मत बदल दी, लोगों की किस्मत बदल दी with the way you drape. इसकी शुरुआत कहाँ से हुई डॉली जी? First of all, I want to correct you. साड़ी ने मेरी किस्मत बदल दी, मैंने नहीं बदली. और इनिशियल डेज में मैं आप सबको बताऊं, मुझे साड़ी से बहुत ही ज्यादा नफरत थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार पूरा 1 घंटा बर्बाद कर रहा है ये साड़ी मेरा, और इसके कारण मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था. तो ऐसा लगता था कि कब ये कुर्ती इतनी इजी है, स्लिप ऑन करो एंड यू आर गुड टू गो. बट आई जस्ट फील दैट आई थॉट कि आई विल बी एबल टू कन्विंस माय मदर इन लॉ कि जब वो मान जाएंगी, कभी ना कभी तो मानेंगी. और एक्चुअली एक दिन आया जब वो मानी, बट जब तक वो मानी बहुत देर हो चुकी थी, मुझे साड़ी से ऑलरेडी प्यार हो गया. The best. अब ये मोमेंट था when you realized कि भाई अब तो शादी हो गई है, अब साड़ी ही पहननी है, अब इसी से दोस्ती करनी है. बट आपने ये जो चेंज आप लेके आए अपने पर्सपेक्टिव में, वो कैसे हुआ? It's a very beautiful story. So what had happened, how these days when we have an event in our family, the first thing we do is chalo shopping karne chalte. Yeah. And for every event we go and buy different sarees or different silhouettes or different outfits. There was a wedding thing in our society, and I wore a saree and I went. And उसी साड़ी को सेम गैदरिंग, अच्छा उस वक्त किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मैं जैसे गई वैसे ही आ गई. And same gathering, same साड़ी, मैं I think 10-15 days के बाद I had repeated that साड़ी. I just, instead of taking it the normal navy style, I took it सीधा पल्ला, a little twist, not even too much. And I literally, the moment I walked in, I saw all the eyes glued on me, and everybody were like, "Oh my God, कितनी प्यारी साड़ी है. Whose साड़ी is this? Where did you pick it up from?" And I was like, "Really?" I think that was the time when it just was like a seed in my brain, and I just felt, oh, you mean you have so many sarees? The moment you change the drape of the saree, so you multiply 1 into 2. So I think that is how, that was the time I just added, which was 1 plus 1. And now I've started multiplying it, one saree into multiple ways. आई थिंक मैं वही बोल रही हूँ कि ना सिर्फ आपने अपना पर्सपेक्टिव बदला, बट आप इतनी क्रिएटिव हैं. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 325 वेज ऑफ ड्रेपिंग अ साड़ी, दैट्स योर रिकॉर्ड? ओके. अब एक तो मैं जल्दी से पूछूं कि डॉली जैन के पास कितनी साड़ियां हैं? आपको ड्रेप्स तो आपके पास बहुत हैं, बट हाउ मेनी साड़ीज डू यू हैव इन योर कबर्ड? I recently counted and I have about I think 1928 now. 1928, and plus she knows like 365 and more ways of wearing those sarees, so you can, I think, do the math and multiply and all of that, which is brilliant. अच्छा, तो जब ये आपका बिजनेस, कौन सा वो मोमेंट आया डॉली जी जब आपको लगा कि यार
ये तो business चल गया है. I am to making money out of this. This is what I do now. Like, what was that moment for you? Yeah. So I still remember I was doing a wedding in, that was my first big official wedding assignment, which I got for Ramoji Film City. I'm talking about almost 17, 18 years back. And she called me up, would you mind helping my daughter-in-laws and daughter for their wedding? And I was like, yeah, I can. I mean, I didn't even know what to carry in my kit, how to go, what to address. I literally had zero clue, but I said them a yes. And the moment I went there, I think I did 80 drapes for each event, like 80, 160 drapes. तो बस ये हुआ और उन्होंने मेरे को एक एनवेलप दिया. एंड अच्छा उन्होंने मेरे से पूछा था क्या लेंगी, तो मुझे लगा कि अच्छा 10,000 रुपीज बोल देते. I don't know, just like that. So okay, then I got that envelope. I didn't even bother to open it. I said, okay, ठीक है, चलो ले लेते. I kept it in my bag and I was in my flight. I said, let's open and see what that 10,000 rupees looks like, because it's my money. And I opened and it had 10, 15, 20. Actually, it had 30,000 rupees. Wow. So, and then I called up the person and I said, listen, I think you've given 30,000. I think आपने किसी और के envelope मेरे को दे दिया है. So please आप ये correct कर लीजिए. मैंने 10,000 rupees बोला था. Then the client says, Dolly, this is what is going to take you to heights. Just watch where you reach, because we thought you're going to take 10,000 rupees per day. And that's how my rate got set. Then for some time, my rate was 10,000 rupees per day. And then it started building up. नहीं, आप जब बोल रहे हो इसके बारे में, we can see that passion while you speak, we see that glow, your eyes twinkle जब आप बात करते हो about your draping. तो celebrity weddings से आपका association कैसे हुआ? Which was the first, celebrity bride, real life celebrity bride जिनको आपने तैयार किया? I mean, first I did was Arpita Khan. And I stayed with the whole celebrity family, basically. I was there with the Khan family for almost 10 days, where I did Malaika and I did all the others also. Helen Auntie, Suzanne Auntie and all of them. But celebrity wedding, I think I started with Sonam. And then Abu Sandeep had done their clothes, and Sandeep knows me very well. And Sandeep started approaching brides and telling them that if you are getting such a heavy clothes, you'll not be able to manage. Just hire Dolly, she'll sort you out. Yeah. And I think that's how. And then when all the, the stars like from Deepika to Katrina to Alia to all these Sabyasachi brides, then all the brides were, Sabyasachi had told them, just call Dolly, you'll be sorted. I think it's the designers who have the trust in me. And also they know that I will do justice not only to the person who's wearing it, but also to the garment and to the designer. Yeah. I think that's very important, not to only keep your aspect, just to show that you've draped it well, but you need to keep the essence of all in one place right. अच्छा, इतने सारे जो अभी आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ अस आर लाइक, ठीक है, हमें अच्छा लगता है साड़ी पहनना, कोई पहना दे, खुद कैसे करें, साड़ी टिकेगी या नहीं, या ओहो साड़ी पहन लिया, अब तो ना अब खड़े ही रहेंगे, बैठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते. आप क्या बोले? व्हाट इज दैट वन मंत्रा दैट यू कैन टेल अस कि हम भी एटलीस्ट आपकी तरह नहीं, बट बेसिक साड़ी पहनना तो हम भी सीख जाएं? मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले ना हमें अपने माइंडसेट चेंज करना बहुत से. मतलब बहुत सारे घरों से मैंने सुना है कि अगर शादी में जाना है शाम को, तो उनको लंच के बाद से टेंशन शुरू हो जाती, यार आज तो साड़ी पहनना है. मतलब इतना बड़ा इशू है. आई मीन इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. देखो, मैं उस वक्त तो बहुत क्रिप की मैं अपनी मदर इन लॉ पे कि मम्मा आपने पहनने नहीं दिया, बट आज आई रियली थैंक हर, बिकॉज अगर उन्होंने मुझे कुछ और पहनने दिया होता तो शायद मैंने इतनी एफर्ट ही नहीं डाली होती इसमें. So what I feel is change your mindset. Just say yes to a sari, and the day you start loving sarees will also be
start loving you the way you love. So I think that's very important. You've put it so beautifully and you're absolutely right. यही वजह है I think that so many people and women in particular connect with you. It's not just कि हम साड़ी पहनने का तरीका आपसे सीखते हैं, but in a way आप जिंदगी जीने का भी एक तरीका सबको सिखा रही हैं. Before I end this interview, डॉली जी, क्योंकि आपके इतने सारे फैंस हैं तो उनके बड़े सारे सवाल हैं जो हम रैपिड फायर के तौर पे आपसे पूछेंगे, तो जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगी और आप मुझे उसके जवाब दीजिएगा, ठीक है? So what is Dolly Jain's favorite sari drape? What is the one style that you love? If a mother can answer among the 5 child which is her favorite, I would answer this. Which is the toughest? जहाँ थोड़ी आपके भी पसीने छूट जाते हैं उसको करेक्ट पहनने में, कोई drape है? I think Nawadi sari is a little tough. Okay, you've done so many celebrity weddings. Who was the most chill bride? क्या आप भी हैरान हो गए कि भाई ये तो बड़ी cool है? Deepika. Yeah, she was chill. She's been like the coolest bride. No stress at all. So organized, so planned. Oh my God. कौन वो एक शख्स है आपकी लाइफ में जिसे मैं बोल, हम कहते हैं ना कि साड़ी परफेक्टली पहनी है कि सेफ्टी पिन सही लगा है, आपकी लाइफ का वो सेफ्टी पिन? I would put it up to my mother-in-law rather. If she wouldn't have given me this, I think that one safety pin जो अटका के साड़ी से रखा गया, वो शायद मेरी सासू माँ थी. डॉली जी, आपने बोला कि when you first started with this idea, तो एक शख्स जिन्होंने आपके साथ जो खड़े रहे वो आपके फादर थे. कितनी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बोलेंगी कि फादर जब बिलीव करते हैं तो सच में जर्नी बहुत आसान हो जाती है. What would you say about the importance of your father in your life? I think he's taught me the way to live life. I used to really crib कि मैं class 7 के बाद पढ़ नहीं पाई. But Papa was always been like a strong support and strong pillar. When I came back crying from one of my clients' place and I said, Papa, बिल्कुल respect नहीं मिलती है. साड़ी draper को लोग बोलते हैं साड़ी पहनाने वाली. तो पापा ने एक ही चीज कहा कि बेटा, कुत्तों का काम भौंकने का है और हाथी कुत्तों के भौंकने से नहीं रुका करते. मेरे को इतने गंदे शब्द सुनने पड़े अपने लाइफ के पीरियड के दौरान. They literally came up to Naveen and said, क्या कर रहा है, तुम अपनी बीवी को घर घर भेज रहा है साड़ी पहनाने के लिए? And it was so harsh for him to hear it. But I'm so glad that we were all together in this fight of ours. मुझे तो पापा ने आसमान दे दिया और पापा के विश्वास ने वो 2 पंख जिसके कारण मैं उड़ पाई. I just thank him every time that whatever he's done for me, it's the best. Right. Emotional with hearing you speak about your father, but I think for daughters, fathers are very, very special. Thank you so much for your honesty. This honestly, I think we've managed to make a connection even though this is virtual. Although I would love to meet you in person. तो आप कोलकाता में अगर मैं उधर आई या आप अगर कभी बॉम्बे आए तो we'd love to host you in our Mumbai studios. But I just want to say you are such an inspiration. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Fever.